Okay, so in this video we will continue the same topic, that is user defined function and built-in function that we have studied in the previous video. So let's begin with the code. Before starting, let me tell you this. A function is a set of instructions that are designed to perform a specific task. A function is complete and independent program. It is executed by the main function or any other function of the program to perform its task. ठीक है? तो as the definition says, function itself एक program होता है, complete program. जिस तरह के मैंने आपको बताया था main program है, ठीक है? main program main भी एक function है. और ये देखें, जब हम main लिखते हैं, ये main MAIN main. अब देखें इसकी रिटर्न टाइप क्या है, मैं पहले बता चुका था आपको, पिछली वीडियो में भी आई गेस नहीं बताया. तो इसकी रिटर्न टाइप कुछ भी, रिटर्न टाइप कहते हैं कि फंक्शन वापस वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, क्या सेव कर रहा है बेसिकली फंक्शन अपने अंदर. अगर यहाँ पे आप वॉइड लिख दें तो भी यही मतलब होता है कि फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है. फंक्शन ने खुद कुछ सेव नहीं करना, फंक्शन में खुद कुछ सेव नहीं होना, फंक्शन के अंदर मौजूद वेरिएबल्स सेव करेंगे. ठीक है, दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन. रिटर्न टाइप्स मीन which type of data is stored by the function. If it is void, it means no data is stored by the function. The data is stored within the function in respective variables. ठीक है, declare variable. For example, if I say int a and b, it means the integer a and b, these two variables, integer type variables, are storing the data. Not function is storing a data, because function's return type is void. If I write here int, it means now the function has ability to store integer type data. Okay, store or return integer type data. Okay, so if you want a return type, if you want a function to store the data, you write the return type here, like integer, float, or anything. And if there is no data, you write void, or you just simply left it blank. Okay. Similarly, what you write within this parenthesis is called arguments, ठीक है, or parameters. ठीक है, this for example, if I write here int a and int b, now these two declared variables are called parameters of the function. ठीक है, if you don't need parameters, you just simply left it blank or write void here instead. So these are two options. तो क्या इसके अंदर जो चीज़ आप लिखते हैं उसे हम पैरामीटर्स बोलते हैं. ठीक है, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ या void लिखा हुआ, उसका मतलब एक ही होता है. ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली वीडियो में हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना था, लेकिन उससे पहले मैंने आपको इसलिए बताया कि ये भी एक फंक्शन ही है. ठीक है, मेन भी एक फंक्शन ही है, और उसका बस जो नाम है वो मेन फंक्शन है. उसको मेन क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन होती है तो एग्जीक्यूशन मेन को सर्च कर रही होती है. एग्जीक्यूशन हमेशा मेन प्रोग्राम की होती है, उस प्रोग्राम की होती है जिसका नाम मेन फंक्शन हो. ठीक है, मेन हो. ओके, अब एक तरीका तो ये होता था. इसी तरह एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले के नाम से. This is another user defined function with the name display, and as there is no return type, you can simply just left that space blank or write void here instead. Both means the same. So this is a function with return type void. It means it is not returning any type or returning or saving any type of data. Now this, for example, program, as the name says, is used to add something on the display. For example, I am user defined program. Okay, now this is a program. This is the body of the program. This thing is called body
of the program, and this thing is called declarator. Okay, this is called declarator. This from here to here is called body of the function. Okay, now here the function is declared as well as you have written the data. Now, now if you want to call this function, you call it in main function. If it is not called, it will not be executed. For example, if I run this program, it will not be displayed because you have declared the function but you haven't called it in main function. It's like that many functions are there in the header file iostream, but as these are not called, so these are not displayed. Let me tell you this with another example. Example, there is a library or a header file with the name cmath. It contains power function, sqrt function, square root function, sine function to take the sine, similarly cos function to take the cosine of the angle, similarly tan function. All are included in this header file, but it will only be called when these are used, and if these are not used, these will not be, and when these are not called, these will not be used. For example, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना पावर का फंक्शन, ये जो पावर का फंक्शन है, this function is present in this header file. Now this function will be used. Uh, let me see ये किस नाम से अवेलेबल है पावर का फंक्शन. एक मिनट, हम इसके सिंटैक्स गलत लिख रहे हैं. पावर का फंक्शन होना चाहिए बट उसको किस तरह से कॉल करना है ये लेट मी चेक ताकि क्लियर हो सके. हाँ सही है. पावर लेनी है ना, तो कितनी पावर लेनी है वो आपने बताना होता है. ये इसका सिंटैक्स है, लाइक 2 की पावर 3 ऐसे लिखेंगे ना, तो 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, व्हाट इज द थर्ड पावर ऑफ 2, 2 2 4, 4 2 8. तो नाउ इट विल से 8. Okay, now where this built-in function was available in this header file, but when you are not using it, it doesn't mean it is not present. It's present in the cmath library, but as you are not using it, so it is not displayed on the output console. Same is the case here. The user defined function is available and it's declared, but as it is not used, so it will not be displayed on the output window. Okay, now ये हो गया हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों हम बनाते क्यों हैं. ठीक है, अब बनाते क्यों हैं, इसलिए क्योंकि आप अपने जो पोर्शन, जो अपना कोड है ना, वो छोटे छोटे पोर्शन में अलहदा से सेव करते जाएं. फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोग्राम है ना, ये एररलेस हो गया है, इसको आप एक सेपरेट फंक्शन बना के सेव करते रहें ताकि अब आपको पता चल गया इस चंक ऑफ द कोड में कोई एरर नहीं है. आप इसको सेव करते जाते हैं, इस तरह आपका प्रोग्राम एरर फ्री भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है और समझ भी आसानी से आ जाता है, कोई भी अगर आपके अलावा उस प्रोग्राम को पढ़ने की कोशिश करेगा तो. ठीक है, तो बेसिकली a program is divided into smaller independent units. These smaller units are called programs. तो ये एक इसकी definition भी थी. Now there is a drawback
if I declare this function after main and then I use it by the word display, it will give me an error. Why? Because it was not declared before main. You can only call the function when it is declared before its usage. Yeah, before, when you are calling the function, it should be declared before the function is called. So as the function is declared after when it is called, so it will give you an error. तो इस एरर से बचने के लिए आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ मेन से पहले पेस्ट करेंगे और सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे. नाउ डिक्लेयर ऊपर हो गया, यू आपने लिखा बाद में जाके बॉडी उसकी, और ठीक है कोड. तो अब जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें उसकी एग्जीक्यूशन अब एग्जीक्यूट हो गया. तो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे आया पहले एग्जीक्यूशन, यहाँ से वो यहाँ पे गया, उसने चेक किया ठीक है अब डिक्लेयर हुआ है, यहाँ से उसके बाद फिर वो यहाँ पे आया और उसने फिर ये सी आउट डिस्प्ले कर दिया. ओके, सिमिलरली एक और प्रोग्राम बनाता हूँ. फॉर एग्जांपल best way is your user defined program should be written after the main program. Okay, so another program with the name display2, and it says I am second user defined program. Now we have similarly, as it is declared after main, so you need to declare it before the main using the same syntax that we have used in declaring display. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें डिस्प्ले डिक्लेयर हो गया, आपने लिखा कोड बाद में जाके, और अब आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने कॉल करना है फंक्शन तो इट इज़ कॉल्ड विद इट्स नेम. तो इसका नेम क्या है? डिस्प्ले. नाउ the both functions will be called. See, now these were the example of the function user defined functions without the parameters. now अगर हमने पैरामीटर्स देने हो तो किस तरह देते हैं वो अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो let's say I'm making another program with return type int, name sum, and it has the ability to take two parameters of which type? Integer type, int a, int b. It has the ability to take two parameters, integer type parameters. What this function do is it returns sum of a and b, like this. Now the return command is used to save the data in main, in user defined function, like here. Now the data a plus b will be stored here in sum, because the sum is also integer type. It's like when you declare sum as a variable with data type integer, so it means now the sum has the ability to store the sum of two or more or any number of integers. Same is the case here. Now this keyword or this function has the ability to store an integer. Okay, so as the sum of these two variables will also be an integer, so I am returning it here. So basically हो क्या रहा है कि मैं a और b का सम
इसमें सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब फिर देखें, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, मेन से पहले, क्योंकि आपने इसे मेन के बाद लिखा है। तो मेन से पहले डिक्लेयर करते हैं ऐसे, फिर इसके बाद ये। अब आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, देखें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब नाउ दिस फंक्शन हैज एबिलिटी टू टेक टू पैरामीटर्स। I will say sum 5 comma 6. Now when I say 5 comma 6, this 5 will be stored in this a, this 6 will be stored in this variable b. Now in the function a and b are added, and their sum is returned to this. So basically this sum will contain the sum of 5 and 6, but as no cout is used, so it will not be displayed. Let me execute this program to show you this. See, we have run the program, but we are not getting any output because it is only stored, not displayed to the console. To display it, you will simply write cout in this. Now see, the sum of both the numbers will be displayed. So here I have tell you the purpose of return and parameters. Parameters can be of any number और of any data types. पैरामीटर्स किसी भी डाटा टाइप से कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, कैन बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, any number of parameters could be present here. Okay, so here this is how you declare and call the function with parameters. Similarly, आप array भी दे सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्जांपल कोई array वाला प्रोग्राम बनाते हैं, डॉट